It's got a good mix. The problem with this mix is that I don't think you're that familiar with the books that we've been reading, and we're going to finish chapter 2 today. But before that, I just want to, you know, uh, just want to read a couple of things which were written in the Joy of Learning diaries on what happened last time. So that also gives you a little bit of a background. And also, we want to encourage you to send in your reflection because the purpose really is to reflect, read and reflect. And we hope that, we can inculcate the pleasure of reading in you and then you reflect because the power comes from reflection. And reflection can be on something that's happened, something that you've seen, so it's not necessarily something that has happened in the Sunday school, but it can be to do with anything you've seen in the course of the week that you want to write about. So when Manisha ma'am was explaining that next Sunday we'll all be at the retreat, uh, so this online session will happen as usual. So it's not that this online session is not going to happen. This online session is going to happen, and uh, Mayur School, Jaipur, and the people in the retreat will join in with us. So we have Sunday school every Sunday, 10:30 to 12:30. Okay. So I want to just share uh, what was written in Joy of Learning Diaries last Sunday. So I guess you can see my screen, right? Yes, it's visible. Great. So would somebody like to read? Is Akansha here by any chance? Akansha, are you there? Okay. Would somebody else like to read? Jigyasa, would you like to read? Sure, sir. Can you kindly share the screen? Yes, 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 yes. I'm going to put it down again. I put it up, unfortunately. Okay, go for it. Okay. The session I attended today focused on teaching how to write an effective proposal to a person or an organization. Through the concepts explained by Karthik sir, I understood the importance of context, tone, word choice, and clarity in framing a strong proposal. I learned that a proposal should clearly present its advantages and possible disadvantages while maintaining a professional and respectful tone. One key takeaway was to avoid making unrealistic promises and not present ourselves as inferior to the organization. The session also encouraged me to think from the perspective of the other party, helping me anticipate possible concern and address them in advance. Through the reading session by Jugjiv sir, I learned valuable life lessons about personality, passion, and self belief. It highlighted how a person's personality reflects their profession and relationships. From the example of Yashoda, I understood how one can find happiness in simple session, also emphasize simple interactions and personal passions, even without fulfilling conventional desire like travel. The session also emphasized having courage in one conviction, which means trusting our beliefs and taking risks with confidence. Another important lesson was to turn dawns into goals and not wait for the perfect moment to begin, but instead take initiative and trust our instinct. Akansha Rai. Yeah, thanks very much. So that was turn don't into goal, right? So those are some very powerful concepts, and I'll just go back a little bit and take you through some of them because it's very, what we read last time has some very powerful lessons. Okay, anybody would like to read the next block? Yes, sir. Who said yes? Sorry, I'm not able. Who's that? Vaishnavi, do Sujani. you want to read? Vaishnavi's got a hand up. Vaishnavi? Yes, sir. Okay, go for it. Uh, the first section with Karthik Bajoria was really inspiring. He explained how to write a good proposal
using simple and clear language. The first part, the best part, was learning about the collaboration with Penguin Random House, where students can share their book ideas and can even get a chance to publish them while keeping their work safe. He also talked about AI and writing, which made the session even more interesting. The second session with Jugjiv sir was very engaging. He discussed the book What You Are Looking For is in the Library and asked us many thought-provoking questions like why trees grow tall, whether plants can talk, and why some people talk to plants. It made me think in a different way, and I really enjoyed the session. Dean Shah Thank you, Vaishnavi. Which school are you from, Vaishnavi? Sir, I am from Vidya School. Great. And which class are you in? Sir, I just got promoted into class 10th. Wow. And Jigyasa, which class are you in? So I'm also from grade 10th. Okay, great. So let me ask you all a question. This is the time when you're all going into a new class. How does it feel when you go into a new class? How So does it feel? full of curiosity and like very much excitement. Right. Anybody else would like to add to that? How do you feel when you get into a new class? So Sir, I thinking like it will be more knowledgeable and Okay, enthusiastic. okay. So you're anticipating it will give you more knowledge. Great. Anybody else? Sir, it feels very nice, but it also feels very sad because we are leaving our previous class, so it feels very sad. You missed, and because you're gonna miss the earlier teacher, or your sections change and friends change. What happens? Hmm. Talat, what happens when you move from? I mean, you feel sad leaving because the teacher, you miss the teacher, your friends change because section has changed. What happens? Yes, sir, because our previous class teacher was very nice and understanding, and Right. she always motivates her. But in class, I'm in class 6 now, so this our now class teacher is also good, but our previous one was very nice. Yes, yes. It's always tough to leave a good teacher, but sometimes, at least when my children were going to school, it used to be a little traumatic because the sections used to change, and suddenly they found that some of their friends are not in their section. But the good part eventually was that you make new friends, right? So that was the good part, which you don't realize at that point of time. You're just missing your old friends. But after a certain class, the sections stopped changing. So okay, so yeah, so when I look back to my school days, yeah, it used to be very exciting. You feel like a little more responsible, right? Get into a higher class and you're anticipating. It's very exciting. You get new books, and yeah, it used to be a very exciting time, certainly. Okay, uh, there is one other blog who would like to read that. Sir, can I? Bhavya. Okay, we'll come back to you all. If you, Bhavya, I saw your hand first, so Bhavya. The next is Talat, and she is present here. Okay, Talat, that's a good plan. That's our model. Talat, if you've written it, then you have first right to read it. So Talat, go for it. Sorry, thank you, Manisha. In today's wonderful session, firstly, Manisha Khanna ma'am introduced Mr. Karthik, a person who always motivates students and take the initiative to talk about communication skills. He told us about an effective proposal writing to a person or an organization. According to me, the main motto of Sir was to teach about proposal writing, context, clarity in writing a proposal tone, word choice, and etc. This session was truly knowledgeable and informative. The next session with
Jugjiv Singh sir was truly informative, where sir read a storybook called What Are You Looking For is in the library. It was really an interesting book, and sir also explained it very nicely. I am really thankful to all the mentors of My Good School Alliance for taking this initiative and giving us this amazing opportunity to improve our vocabulary and English speaking skills. Closing the session, Manisha ma'am told us more about the good school class as some students were new. Thank you. Thank you, Talas. Uh, so as you can see, we have a very broad range of classes from which children are, and so we try and it's how real life is, right? You're not only interacting with people of your own age. So I think that's one of the learnings when you have children from different ages in your class. So let me stop sharing, Manisha ma'am, and let's get on with the book. Today is Easter. Who will tell us what is the significance of Easter? So I'm sorry, I didn't hear you. No, just you can share the book. Meanwhile, I'm just asking the question as to what is the significance of Easter, since today is Easter. Easter Sunday. Yep. And what do you associate with Easter? Anybody? What is Easter? Why We is had Good Easter? Friday and now it is Easter Sunday. So what do you think it is all about? Resurrection Day of Jesus Christ. Right. Absolutely. Sorry, I was flipping. Who was that? Sounded like Arfa, right? Arfa? Yes, sir. Yes, yes. Okay, yeah. So, yes, that's what it is. And basically, it holds out hope, right? New beginnings. And it is deliverance from sin and suffering of the world, right? And the interesting thing is that, Christians also have this month of Lent when they are supposed to be fasting. So it's a very interesting concept, right? It's not only obviously it's there in amongst the Muslims and the Hindus, but even in Christians, there is concept of fasting during Lent, which leads up to Good Friday. Yes, the associate Ishika, thank you. Yes, Easter associated with eggs and bunnies, and it's new beginnings, right? Okay, so in the blog that we just read, there was some reference to what happened last time, and I'm just going to read a few uh, lines from that to give you a sense of what we read last time. But okay, before that, let me tell you what the book is about and what this chapter is about for those of you who are coming for the first time or missed some sessions in the middle. This book is called What You're Looking For is in the Library uh, by Michiko Aoyama. It's a contemporary book. It was only written in the 20s. That's 2000. That's like 5, 6 years ago, and it was written in Japanese and translated into English. And it has 5 chapters, and there are 5 different stories, right? But there are some commonalities in the stories. One commonality is this Hattori Community Hall and the library there, and the librarian who basically gives suggestions around books to whoever comes and asks her, right? So this story is about Rio. Rio is a 35-year-old accountant in a company. When he was a child, he wandered off into a antique shop, and since then he's been fascinated by antiques. He has a girlfriend called Hina, and she's 25, and she is also fascinated by uh, seashell glass items that come onto the shore via the sea, and they sort of
Obviously, their edges are all smoothened, and she makes things from them. And she recently started an online business. And in a couple of sessions ago, we read about how uh, Hina had a fight. Actually, Rio had a fight with Hina because he was a little he was overwhelmed by his day in office, and he couldn't leave his office troubles behind in office, and he took out his frustration on Hina. Hina had brought a bottle of wine and two glasses to celebrate her first day of sales in her online shop, and he just sort of dismissed it as saying that she was, she led a life of what she felt like doing. Because she worked for a couple of days. She did her own glass shelves. She now started an online store. So he just said that, she's having a good time, and, it's of no consequences what he was meaning by the way he said what he said. Uh, Hina's office environment is, sorry, Rio's office environment is that he has a boss who doesn't understand modern software. And so he keeps troubling Rio. Rio is a very competent person. And Rio's assistant is the president's niece, Ms. Yoshitaka, who has more interest in grooming and talking to her friends rather than work. So Rio is sandwiched over here where he has to end up doing work for his assistant and work for his boss. And his dream is to set up an antique shop, but he's been right through the story we have seen. In the first half of the story, he's always uh, said it's a dream that'll never happen. And one day when, Hina goes to the community hall to listen to a lesson uh, on minerals. He wanders into the library and looks for books and meets the librarian. And he sort of talks to the librarian about what he wants to do, what he's doing, and she recommends a book to him, which is called "How Worms Work," and she gives him a small gift, which is a felt cat face. Okay, and she tells him write to make sure that he goes to the desk and sign out. When he goes to the desk to sign out from after meeting her, he finds a newsletter in which he sees that same cat's face, and so he picks it up because he's just been given that gift, and that cat uh, leads him to somebody called Yasuhara. Yasuhara, goes online and reads about him, and Yasuhara is is having what he calls parallel careers, and this is the first time that Rio uh, starts to understand what a parallel career is. So he is running. He works in an office, but he also runs a store. And currently, what we were reading last time, Rio has come to Yasuhara's store to seek his advice on how he can uh, get to his dream of opening an antique shop. And in that conversation uh, is when the points that came out in the blogs that we read were made. Okay. So let me see. Let me take you to where what I wanted to read for you one sec before we get to what this is, because they were very important points. Okay, so this is what kind of experiences has he had? Now, this is Rio thinking of Yasuhara. Who has he met here that can cause him to speak with such conviction? So, he also notices that Yasuhara is smart, knowledgeable, discerning, well connected, having the courage of his convictions. Not like me, is what Rio thinks. So the first point is about having courage of your conviction. And the point I wanted to make is that comes from your own experiences, learning from your experiences, meeting different people,
That's what leads to it. It's not something that you're born with, right? So it depends on the efforts that you put in. And does everybody understand the meaning of having courage of one's convictions? Does anybody want to tell us what is the meaning of having courage of one's convictions? Anybody want to tell us what does having courage of one's conviction mean? Okay, your convictions are what you believe in. Okay. Having courage of his convictions, having courage of one's convictions, what does it mean? Having strength on one's beliefs, principles, whatever. Yes, having, having, uh, standing up for your beliefs. Okay, sticking your neck out, standing up for the right thing, and also following through on what you think is the right thing to do. Okay, so if you have the courage of your convictions, that's what you will be doing. Not letting go of your beliefs, Ishika says, yes, absolutely. Okay. The second point I wanted to make out of what we read last time was that Rio said, I don't have anything, not enough money, not enough time or courage. I always think that one day I will do it, but never do. I don't have what it takes to get started. And Yasuhara's reply is, the moment you say don't, you are done for. You have to turn that don't into a goal. Okay. And I will extend it by saying, when you say to yourself, I can't do this, try and turn it into a goal. Everybody understood? It's a very powerful thought. Okay. Converting your don'ts, converting your can'ts into a goal. Right? Somebody said a couple of years ago, I'm scared of being a monitor in my class. Right? And that person became a monitor after a year or so. Would that person tell us how it went? Arfa, will you tell us? I've become more of a confident person in terms of leadership now. I'm not afraid of taking the lead, and usually I'm the person who takes the lead nowadays. And how did this change happen? Actually, when I went to ninth grade for the first time, I didn't know anyone, and the class teacher just called out my name, who's Arfa. So I said, that's me. Then she just handed me that badge, and I didn't have any choice but to accept it. So I was just forced to do it, and I somehow did it pretty well. So I just limited myself at that time, which it was not a good thing to do. Once we label ourselves as I'm a shy person or I'm not good at this, we are just limiting ourselves. But we are capable of doing so much more. We shouldn't think that we are stupid or something like that. We should turn it into a goal, an aspect on which we can be improved upon. Thank you. That is fantastic, Arfa, and very tough to add to that. Okay, let me read the third piece on that. Yasuhara tells him that I didn't like being around people, he says, and gives a wry smile. And so this was, Rio thought was an extraordinary statement, right? So then he goes on to say, Yasuhara, but there came a time when I thought I ought to make an effort and listen to what other people might have to say. Once I started to show my face here and there, I had encounters that led to all sorts of opportunities and connections. Okay, so Arta was thrust in this in that situation,
And as some of you said in chat, yeah, it's about changing your mindset or having a positive mindset. You know, many times we talk negatively to ourselves. Our self-talk is negative, and it's very important that that self-talk is positive. But so here, Arthur was thrust in that situation. Here, he himself found, okay, I ought to make an effort, and he started to make the effort, and he found uh, everybody is connected, and many of the connections could be the start of a network that branches in many directions. If you wait for the right time to make connections, it might never happen. But if you show your face around, talk to people, and see enough to give you the confidence that things could work out, then one day might turn into tomorrow. Okay, so that third piece, just go out and do it rather than worrying about what may happen. Okay, so Manisha, now let's go with what we're supposed to do today, because I just thought I'd repeat some of these key pieces of it. Now I'm going to try and go back. Manisha, go back. I confused you, thought I was doing it. I just stop there. Just stop it. Just stop it. Just go ahead. Go. No, go ahead now. One ahead. Go back. I Manisha. actually lost you. Where you I are? know. I know. I was just. I know what I did to you. Just go back. I was reiterating some points that came from last time. At Okay, some now point. This one. no. You just doesn't matter. Now you stay here. I'll just read a little bit, and we'll come to this. We'll come here. Okay. Uh, uh, maybe you go one page back. Sure. Back. Yeah. Okay. But you're doing what you want to be doing now, aren't you? I asked. You've achieved your dream. Yasuhara tips his head to one side. I don't think of this as the dream. But if all I wanted was to be surrounded by cats and books and beer, I wouldn't need a bookshop to achieve that. When I opened this place, that didn't mean I got what I wanted, and that was the end of it. Now I have the shop. Now I have the shop. There are things still to do, things that can't be expressed in numbers. That this throws me, right? It just surprises him to the extent that he feels he's like not understanding. That's what physically it means. Like that's what it suggests, right? Throws. Here he is in the perfect setup and still looking for other things to do. But when I look at his face and see the light in his eyes, it makes perfect sense. I can see how this might be the true goal of the dream. Yasuhara places his hands on the table in front of him and clasps them together. Rio, let me ask, why do you want to open an antique shop? Not just to be surrounded by antiques, surely. Why open a shop? I look at the ground. This is the question that will lead me to the path I ought to take. And in truth, I already know the answer. I will have a good think about it. At some point, the mackerel tabby at my feet has nestled itself against my shin. I get down from the stool to pat it. A mackerel tabby is a cat which we also normally see around here. It's the one which has all those stripes. Rio, do you plan to open a shop by yourself? In my mind, I see Hina's face. If only she would do it with me. I would be so happy. But it's hard work on your own, says Yasuhara. You need someone else there, a partner, family member, or friend, someone to discuss things with and let off steam. If you don't have a partner to share the mental stress,
It's exhausting. Yasuhara looks over in the direction of the lattice door and the woman behind the till. I get it. She's your partner, isn't she? Misumi, my wife. What did she say when you told her you wanted to open a shop? Yasuhara looks away. She didn't say anything. Then he turns towards me with a gentle smile and with an expression I have not seen on his face before. She said nothing and went along with it. I am forever grateful to her. The next day, Sunday, I returned to the Hattori community house on my own, ostensibly, which means on the face of it, to return the library book. But there is somebody I want to see. After handing the book to Nozomi, I go over in the reference to the reference center. Miss Komachi, she's the librarian, reference person who gives the guidance. Miss Komachi, I paid a visit to Cat's Now Books. Her eyes open just the tiniest bit wider, and she gives a satisfied smile. The Yasuharas send you their regards. Ah, Misumi is an old friend. We used to work at the same library. How is she? She seems fine. Sir, sir, Yeah, I want to ask you a question. Anji. I am new here and it is my first day. So can you tell me the benefits of good school alliance? We'll come to that. We can just finish the this what we are doing. We'll answer that question. Okay, just hang Okay. on to that question. Okay, what we're trying to do right now is to read this book, right? It's called What you're looking for is in the library. One of the purposes of Good School Alliance is to encourage you to read and get you into reading. She seems fine. They're a nice couple. I say and take the felt cat mascot from my bag. You pointed me at the shop, didn't didn't you? I want to thank you. I'm going to try and get started on doing something now, not just wait for one day to come along. Her head tilts ever so slightly to one side. But you're already doing something. I swallow. I didn't send you there, she continues. You noticed that shop by yourself. You decided to go there and you made the effort to meet Yasuhara. You've already begun. Then she twists her neck around with a clicking sound. The felt cat, sitting on the palm of my hand, stares at me with eyes that look as if they might spring to life at any moment. There is one more person I must see. After leaving the community house, I head for Hina's place. I put my hand in my pocket and gently rub the sheep spoon that I had put in there for good luck. So this sheep spoon is something that Rio had picked up from this antique shop when he first visited it when he was 15 years old. Okay. Before leaving home this morning, I phoned Hina to apologize for Friday and to ask to meet. She told me to come over as her parents were away. When I arrive at her house, I ring the doorbell and she answers the door immediately. Come in. I enter and follow her upstairs to her room. Tools and pieces of sea glass are scattered across her desk. She must be in the middle of making accessories. I'm sorry about the other day, I say, repeating what I already said this morning. My limited range of self expression is disappointing. Hina bursts out laughing. You've already said that. Her smile is my salvation. What is salvation? What does salvation mean? Anybody, what does salvation mean? Salvation is getting out of a difficult
situation, and it's used in also in terms of going to heaven. From my bag, I pull out a bottle of wine and two glasses, the same bottle she had brought to my apartment. She looks surprised as I open it and pour two glasses. Congratulations on meeting your target. Thank you, she says, with a self-conscious nod of acknowledgement. Cheers. Wine slushes up the sides of the glasses as we clink them together in a toast. You're amazing, Hina. Not just because you achieved your sales target, but because you make your own path. That's really impressive. Hina flashes me a quick smile and picks up a piece of sea glass from her desk. So now you can see how, based on what has happened over the last week, uh, Rio's mindset has changed. What I didn't share with you is that that book that the librarian had given him was a book called How Worms Work. And there was a chapter on it on plants and how uh, there is so much of the plant which is below the earth, which we never see. But for the plant, that part is equally important as the part above. And so he links it up with the concept of parallel careers, and he went and meet, then as we just read, he met Yasuhara and got a lot of advice, and his full mindset has changed from where he thought that he now just having a good time to now he's realizes that she's making her own path. You know, some people believe that the future owner of a handmade object is already decided before it's made. It sounds corny, I know, but that's kind of how I feel. Uh-huh. When I make a piece of jewelry, I think about the person who might wear to use it, who might wear or use it. I don't see their face or anything like that. It's more that I feel a connection with the unknown person who will own it. So when I'm working on a piece of sea glass and think about it passing through my hands on a long, long journey in time and space to the person it's meant to be with, well, that just makes me feel super happy. I can really relate to that. I feel the weight of my own treasured object in my pocket. Enmukoya, that was the name of the antique shop we used to visit, may not exist anymore, but it is the place where I found my spoon. A spoon that could have been used by an aristocratic lady for her afternoon tea, or a mother to feed her young son, who in turn treasured it long after he grew up, or a favorite spoon in a family of three sisters. Might even I might even have used it when I was little. It has gone from hand to end up with me. And Mukoya brought me together with my spoon. I want to do the same. I want to bring people together with the objects they are meant to be. Objects that are meant to be passed on forever, belonging to different people at different points in time. I want to be the intermediary for such encounters, to provide a space where they might occur. This is the biggest reason I want my own shop. Hina, I have something to show you. I pull a thin file from my bag and open it up in front of her. It's a budget spreadsheet I made the night before, an estimate of how I might need to set up an antique shop and run it. I calculated the upfront costs of acquiring a property, renovating the interiors, installing air conditioning, fixtures and furnishings, and buying equipment, and ongoing costs for rent, utilities, office supplies, and stock once it opens. Then I calculated the average daily takings required to maintain the shop. I racked my brains and drew on everything I knew about accounting in order to come up with this blueprint. I'm going to prepare to open a shop.
but I won't quit the company. I plan to keep my job and run a shop at the same time. Tina claps both hands over her mouth and looks at me with wide, dancing eyes. Rio, this is fantastic. It's a wonderful idea. You're so amazing being able to make something like this happen. So, What will is you help me? that? I bite back the words I had planned to say as a marriage proposal. After all, I can't be sure it will work out. And if we were to marry before opening the shop, it might make more work for Hina. No, take that back. It's certain to make more work. So it would be better to wait until I've got the whole thing running smoothly and learn the knack of doing both jobs at the same time. Then oh damn, there I go again, saying one day. I feel deflated. I'm not like Yasuhara. I can never be the kind of man a woman will follow without question. I'm fast chickening out when Hina breaks through these thoughts. Rio, let's get married. The sooner, the better. Just like that. For a second, I'm speechless. I splutter. Ah, because I remember Mr. Ebigawa from Inokoya, who ended up becoming a matter for the police. But what if it doesn't work out and the shop fails? I protest. If it fails, is that not allowed? Hina demands. Oh, my thoughts do a swift about turn. With astonishment, I realize that it is allowed. The reason for the law's interest in Mr. Ebigawa was his failure to pay off his debt after disappearing, not because the shop failed. So, have to say we did have to close the shop. It's not going to harm anybody, is it? It just doesn't look good, that's all. I have no use for stupid pride, Theo. Besides, don't you think it would be so much easier to do this together as a couple rather than have to employ a stranger to help? Did she say do this together? Yes, that's what she said. Suddenly I feel braver. Now I get what Yasuhara must have felt too. When he told me that Misumi went along with it, he must have meant it in the sense that they did it together. There is no main job and secondary job. Both are equally important. That could be true for a couple too. Ina is staring off into space, mulling over something. If we go ahead with this, there's a ton of things to do, Rio. You have to go to the police for a start. The police? Of course, to get an antique dealer's license, you have to lodge the application with the police. I laugh. She is right. All roads lead to the police. Tina taps one finger against her chin, deep in thought. But we should get started on crowdfunding before anything. Okay, now today I'm just trying to read a little faster than I normally read because I'm trying to finish this chapter. It's got 3 more pages to go. But any questions so far, any thoughts, anything that you're not sure about? You know, this concept uh, of having two jobs, doing both things, I mean, it's today's concept, right? And when you all, we've heard of gig workers as well, right? So, I mean, these are concepts that are relatively new. They were not around when, I had started working many, many years ago. But these are sort of concepts that, you all must be familiar with, right? And you should be at least open to. The workplace is also changing, as we get into Shashwat says it is extreme pain. What is extreme pain, Shashwat? Tell us what is extreme pain.
What is the meaning of racked? Racked one's brains. So what? Okay, in that context, it's searching, right? Thinking. Okay. Anybody else? Any other question? Any other thoughts? Racked. Bhavya asked on chat, what is the meaning of racked? R-A-C-K-E-D. So I was just answering that, Talat. Okay. Okay. So this is a fairly common concept now, right? Compared to what it used to be. Gig work, working on having a career which is made up of different things, not necessarily one thing. I think when you go into the workplace, you will find this fairly common. Yasuhara had also mentioned crowdfunding in his interview. To hear Hina propose such a thing is startling. Does anybody know what crowdfunding is? Anybody know what crowdfunding is? I mean, as the word suggests, crowdfunding. So, Raising money from people. yeah, it's like retail fundraising because you're getting it from whole bunch of people. So that's the crowd piece of it. Funding is what you're raising money, and it can be for a startup. It can also many NGOs also do crowdfunding. So there are many platforms out there, who list the NGO's requirements, and the NGO writes a story around it, and they have ways of reaching out to people, and people may choose to support that cause or not, and so that's what crowdfunding means. Yeah, raising capital for new projects is just one of the ways. Yes, Athar. Okay. Is that easy for amateurs? I ask. She rolls her eyes. Rio, crowdfunding is what amateurs do. Then leaning in close, she asks, Rio, dear, have you ever thought about what makes the world go around? Uh, Love, I guess. Oh, that's priceless, she cries. You never cease to amaze me, Rio. But that's what I love about you. I believe it is trust, she adds. Trust? Yes, trust. Anything you do, borrowing money from a bank, commissioning a piece of work, sending or receiving a parcel, making a plan with friends, ordering food at a restaurant, all those things only can only happen because of mutual trust on both sides. I stare at her words as the words roll off her tongue. I always knew that Hina was far more information savvy than I am. She's always alert to what's going on and forever weighing things up. But now I see what a go getter she really is. So, if you think of the life that Hina's been leading and the life Rio's been leading, this is what happens, right? Because Hina is doing different things. She's, involved with what's happening in the world, whereas Rio is just stuck in doing his job and dreaming about opening his shop. He works overtime a lot, so he's not looking anywhere. He's not looking around. He's just too focused on what's happening in his own life and being just totally consumed in it. And that's a trap we have to watch out for in whatever we are doing. But then if I'm absolutely honest with myself, I simply might have been pretending not to notice all along. Deep down, I've always known Hina's head is not in the clouds. It is only my stupid pride at being a man and 10 years older than her that got in the way of my acknowledging her.
for who she truly is. Okay, so that also happens a lot, right? And just because you are male, you think you may be better. Just because you're older, you may think you are better. Okay, these things are fast changing in this world. Okay, in today's world, this is certainly not necessarily true. But still, uh, many times our ego comes in the way. Would anybody like to talk about this? Anything that you've been through yourself which is similar? Or does it ring a bell with you? Not sort of acknowledging something because of your ego. Right? Do you understand the word ego? People understand what ego means? Yes, sir. Okay. Tell us then, what is ego? Ego is the obsession with ourself, our identity, and holding ourselves on some pedestal, thinking we are better than others. It is like similar to narcissism. Right. So you think, and because of that, as in what we just read, it prevented Rio from acknowledging Hina's skill set, right? And it's possible, right, that you could, yes, Sunny, it means showing attitude towards something or someone, right? And it's possible that you can't be best at it, better than everything, right? Some people are good at something, some people are good at something. So, but because you think you're supposed to be better, that's what comes in the way of you acknowledging somebody else. And this is a very, very normal thing. It happens a lot, right? I think in our philosophy, we all know, right? Kam, krodh, lobh, moh, ahankar. एक मात्रा में सही है पर ज्यादा दिक्कत है. Okay, so this is the point. If money is your only object, then crowdfunding can be a lot of trouble for nothing because you don't know if you will raise enough to start a business. But it's a brilliant method of PR. PR is public relations. But that's what makes it really worth doing. It's a way for you to show people your passion and earn their trust. If anything, it's the people who have no business experience but are totally sincere who get the best response. And once you open a shop, everybody who's been supporting you online is happy to come and see it. That's the great thing. Right? Hina's already selling online, right? So she must have researched, got some experience from the space, and she's talking from that. My heart begins beating faster. Though it is still only hypothetical, I can envisage a picture of us together at the center of this dream, one that now seems totally real and possible. Hina, I think I might be getting excited about this. I tell her, putting my hands to my chest for emphasis. She grabs my arms joyfully. That's what I wanted to see. Choosing to do something because it excites you is the best reason of all. I just know it. My glance falls on a small glass bottle on the corner of Hina's desk. And I remember what Jaswara had said. The important thing, inside that glass bottle, which Hina clearly treasured, is the piece of Red Sea glass I gave her that day we met on the beach. All of a sudden, I feel confident. It will be all right. I can do it. The next day, Monday, I'm summoned to the company president's office. Now, his assistant had made a false complaint against him. Okay, so this is in connection with that. What is my punishment to be? Salary cut, demotion, or in the worst case, getting fired? The abrupt
termination of my office job would be no laughing matter, with my eyes now set on a parallel career. Instead, the president greets me with an apology. Mia's been causing trouble. I'm sorry. So now you just think about this. The president is called Rio, and he's doing the right thing, right? So he's in a higher position, but he's conquered his ego to do the right thing. Mia is talking about Miss Yoshitaka. Personnel reported the incident to me on Friday. I asked Mia what happened, and she repeated the same story. But then I saw Taguchi at golf on Saturday. Taguchi is Rio's boss. Mr. Taguchi, when I told him, he was furious. You would never do anything like that in a million years, according to him. He told me that there is nobody more sincere and trustworthy than you. Even all the other departments think so. I am flabbergasted. Mr. Taguchi said that? Even knowing that Miss Yoshitaka was the president's niece? I was quite taken aback, I can tell you. I have known Taguchi a long time, but never has he spoken to me in that manner. So then I had another chat with Mia, and she admitted it was her fault. It was just as Hina said. The president trusts Taguchi. Taguchi trusts me. Trust makes the world go around. Okay? Does anybody want to tell us what trust is? What is trust? So it is the belief. Go ahead, Sujata. So it is the belief that comes from ourselves to believe a person like yes they are and yeah. Yeah, so it's you believe on someone, as Sunny says, believe in somebody. Yes. Okay, so and also the examples Hina gave, right? Like uh, you will go on to let's say Zomato. You trust the platform. You would order from a restaurant. You have trust that the product will get delivered. They have they have trust that sometimes many 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 companies do cash on delivery. They have trust that you will pay them, right? So, I mean, as Hina has explained, the world runs on trust. Trust makes the world go around. Okay. Now let's talk about how trust is built. How is trust built? How do you build trust? How do you build trust? By knowing someone's nature, Yes, and by we can belief. do them a favor. Say that again, Arfa. We can see people's behaviors towards other people, how they are, if they're sincere, and if we want someone to trust us, then we can act kindly towards them and do them a favor to prove to them that we are worthy of their trust. Right. So it's the point you made is that you watch somebody's behavior, and as Bhakti says, trust builds slowly to good actions and honesty. Right. It's a slow process. Right. And one thing that I have, be honest, Satya said, yes, one thing that I have seen is trust begets trust. Right. If you trust somebody, the chances are they will trust you back. Okay. You can build trust by helping, giving good action, etc. Richard Shah says, yes. Right. Communication and transparency, absolutely. Trust is, built on good communication and transparency. Right. So we've sort of seen uh, why trust is important and how trust is built. Right. Sometimes you do something
and you lose somebody's trust, right? And as the saying goes, I think you know that it's very, you can break trust very easily and very quickly, but it takes a long time to build trust, right? Consistent, honest, and reliable actions over time slowly builds through time. Yes, ego means a negative pride in ourselves, considering only ourselves the best. Yes, yes, Samrat. Okay, so just a page left, Alicia. Miss Yoshitaka is absent from work that day, but turns up again the next day, looking nonchalant. Nonchalant means as if nothing has happened. She comes to stand in front of me and says sullenly, right? Sullenly means she is sulking, right? Or in a sort of low tone, uh, not exactly happy. I'm sorry. Then, without meeting my eye, bows deep in apology. Right? Bowing is a big thing in Japanese culture, right? As a greeting, when you say bye, it's a means of showing respect to people. It's okay. Let's get back to work now. I say to the back of her head, and that is the end of it. Later, when she's away on an errand, Mr. Taguchi says, Murase, you let her off too easily. She's probably giving you the finger in her head. I smiled wryly. Well, at least she didn't quit and run away. She turned up to work again. So I'm fairly sure she feels guilty. That's why I decided to trust her from now on. Mr. Taguchi pulls a skeptical face. I hand him 3 pieces of paper. This is a troubleshooting manual I put together for the new software. I collated sections that you might have problems with. What? He stares at the manual I made for him. This is great, an enormous help, he says with a nod of thanks. I think it will help us both to be more excellent. Yes, now we don't have an excuse to interrupt his own. Now he won't have an excuse to interrupt his own work to ask me what to do or repeat the same question over and over. This manual is one step of preparation for my parallel career. The first thing I need to do is streamline my work in the office. No more unnecessary overtime. Urase, there is something different about you today, Mr. Taguchi says teasingly. Since you're in such a good mood, how about going out for a drink? Sorry, but I have to leave on time today. Tonight I'm seeing Mr. Nasuda, who is going to teach me about shop locations, real estate companies, interior furnishings, and so on. Things I need to know to open a shop. Hina is also going to contact the minerals lecturer, Mr. Mogi, for more information on buying supplies. Together, we are setting ourselves in motion, pulling on the invisible threads of our connection. There are so many things to do, but I won't make that the excuse that I have no time anymore. Instead, I will think about what I can do with the time I have. Okay? There are so many things to do, but I won't make the excuse that I have no time anymore. Instead, I will think about what I can do with the time I have. One day is going to become tomorrow. Okay, so sorry, Meenakshi. Sorry, Manisha, I went over time, but I just wanted to finish the chapter. Yes, Ananya. What is the meaning of manufacturing and transfer? Sorry, that's certainly not the word. Magnification is not the word, and transfer. I'm trying to find it in the book, Ananya. I don't know what you mean. That's not the right. right, 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 right,
So many times, when we're looking for meaning, if you're listening and you can put it in the context, you can understand what it means. Right? Sorry, I mean you've not written the right spelling, so I'm not able to figure this out. And then yeah, sorry. Okay. Any other thoughts? Any other questions? We just finished chapter 2. I know some of you were not. Apology. Does anybody want to tell Diksha what apology means? What does apology mean? Can anybody tell Diksha? Being sorry for your past or action. Yeah, saying sorry is apologize. Yeah, so Manisha, we'll sort of cover more about the book and the chapter next time. Over to you. Thank you so much, sir. It was actually wonderful. And like since the chapter got over, next week children will be able to understand better as we'll be starting the new chapter. And Shubham Kesri, in between the session, you have raised your hand quite a few times. So do you have any question? Shubham Kesri? You were raising your hand quite a few times. And Ananya also. So in case you have any question, please ask now. Okay. So one of the question which came in the middle when sir was reading the chapter was why you all are here in my good school. So one important thing why you all are here, because we want to enhance your 6C, critical thinking, creative thinking. So when your critical and creative thinking is taken care of, you want to communicate with people. So when you're communicating your people, that is the third C. The fourth C will go that when you're communicating, naturally you want to write also. This is the platform which we give you for writing. So whatever you're writing, we do take it from you and then we publish on our website. So after your communication skills, what is the next part will be, you are going to have your character that's been taken care of. And when your character is also built, you have become a good citizen of India. So it is all about certain things which you require for your studies to be a happy person and to earn your livelihood as well. So now when we talk about why you are here, the main reason is not, this is a common platform for educating, not only educating, you are interacting with all of us. In school, you're interacting with only a number of students, which are those who are your classmates or maybe your schoolmates. But here, different schools are participating. So you get to understand the mindset of others, what they are doing in their school, and what you all can take away. So retreat is also one common platform where you understand what they are doing in their school and what you can learn from them or what you can teach them. It's like peer teaching learning, which you are also doing in your school, but that naturally every school has their own system. Every school is having something new to deliver and something new to learn. So this is what one part. So do you want to add something over here? So yeah, so we focus on the 6 C's, as Nisha ma'am said, and the way we do that is through the Sunday school, as you sort of saw today. We are reading, but we're also reflecting. We are thinking. Picking up things which come up, which basically will help you make yourself more self-aware. Okay, because reflection is the means of doing that, right? And if you become more self-aware, it can lead to better self-regulation, right? So, the world that we live in today and what the world that is there tomorrow, which is going to come tomorrow, socio-emotional learning will be very, very important, far more important than it's ever been. Because in the world of AI, this is what will differentiate a human being from a machine. Right. So your ability to be self-aware, ability to self-regulate, the ability to understand other people, to make relationships, to make the right decisions. These are critical skills, right? Along with what Manisha ma'am pointed out.
and we try and bring them up in the course of our reading, right? The books will have some message, right? So there's opportunity to think about what we've read. Uh, so that's why we want you to reflect. Okay? It's really important that you reflect, because only when you reflect will you open the side of you, right? And we have other programs, as Nisha ma'am pointed out, and you're free to join those as well, especially the Friday evening one, which always has an author coming in uh, and talking about their works, the books that they write. At least once a month we have a guest coming in. And for the last several months, we had Karthik Bajoria, who's a communication expert coming in and also a mental health expert. So, what each of these sessions is there on YouTube, it's recorded. You can go back to the earlier sessions and see. So, if you have interest in communication, and communication is a very critical skill, and everybody, whether you have or not, you should read those for sure. You should go back to YouTube and look at those sessions for sure, because those are uh, very crucial skills and very fantastic tips that Karthik has put together based on his experience. And he's made films, he's written books, he currently does book reviews, he's into teaching, he's into uh, you know helping folks in mental health. So he knows his subject really well, and he's sort of culled out from his experience and shared that with us. Before that, we had sessions around puberty, sessions around what happens in puberty. Uh, we'll have more guests coming in the future. So at least we had Amardeep, who came in and ran his docu-series on Guru Nanak's travels, and that was about oneness, because we believe in oneness, right? No difference of caste, color, creed, you know, money. So uh, we have somebody coming in at least once a month to talk to you about what they're good at, right? And these are things again which build into your experiences. Uh, we also have that happens on Sunday, and Karthik is coming in next Sunday, as Manisha ma'am said, and Saturday we have two sessions, largely for the teachers. And Thursday is a new session which has started also. And Brinda ma'am reads that. And if you come next to next time and listen to Brinda ma'am read, it's like she's reading, but it's like, to me, it seems like poetry. She is just amazing, amazingly good, and also knowledgeable. So, and she's reading a fantastic book, My Family and Other Animals by Gerald Durrell. And so that's what's happening in Sunday school and some of the other sessions. And I think should have given you some idea of why you should attend. Okay, Manisha, let's get on with your book. Manisha ma'am normally reads the Hindi book. So yes. So thank you so much, sir. As you all know that every week we have the 2 reading sessions. So I hope the book is visible. Yeah. So my next book is Ruskin Bond's The Whistling Schoolboy और अन्य कहानियां. ये बुक अब खत्म ही हो चुकी है. अब हमने रस्किन बॉन्ड की ही एक और हम बुक पढ़ने वाले हैं, जिसका ऑलरेडी मैंने पिक्चर ग्रुप में शेयर किया है. तो इट बी गुड इफ यू बाय दीज बुक्स. ये बहुत ही लंबा चैप्टर था जो मैं पढ़ रही थी, देवदार के घने जंगल के बीच में स्कूल. सो किसी को याद है ये कहानी? कोई बता सकता है क्या हुआ अभी तक देवदार के घने जंगल में एक स्कूल? ओके. अगर आपको याद नहीं है तो मैं पीछे क्या हुआ, क्योंकि बहुत से आज नए बच्चे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी. ये कहानी छोटे से स्कूल की है जो कि एक जंगल में है. और ये जो जंगल की हम बात कर रहे हैं, ये देवदार का जंगल है. देवदार पेड़ होते हैं और यहाँ पे ये हिल्स के ऊपर है. तो ये स्कूल तक आने और जाने में बच्चों का बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाता है. एंड फैसिलिटीज यहाँ पे कुछ भी नहीं है स्कूल में. और चूंकि उनका स्कूल जो है एक जंगल के अंदर है
और आसपास जो छोटे छोटे गांव है वही बच्चे वहां पे जाते हैं। रास्ता बहुत ही संकरा है, छोटा है, और बहुत से बच्चों ने ट्रेन, एयरप्लेन और यहाँ तक कि बस की सवारी भी नहीं करी है। तो इतने कठिनाई के बावजूद भी सब लोग एक जगह पे सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने आप को समझाने के लिए कि लाइफ कैसी है, कैसे हो सकती है और पढ़ने के क्या फायदे हैं, इसलिए ये स्कूल में आते हैं। इस स्कूल के लिए बहुत ही ज्यादा ये फेमस था कि यहाँ पे एडवेंचर बहुत ज्यादा बच्चों को मिलेगा, और हवा वगैरह बहुत ज्यादा चलती है। चूंकि जंगल के पास स्कूल है तो वहां पे गांव से काफी एनिमल्स भी आ जाते थे। तो एजुकेशन किस तरीके से रिमोट एरिया में होते, क्योंकि हम सब ब्लेस्ड हैं, हम सिटीज में रहते हैं, तो वहां पे एजुकेशन हमें बहुत अच्छी मिल रही है। बट गांव के में होने का मतलब ये नहीं था कि वहां के टीचर्स अच्छे नहीं थे। वहां के टीचर्स बहुत ही प्यारे थे एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे से बच्चों को पढ़ाते थे और उनकी नॉलेज को एनहांस करते थे। सिंपल लिविंग कैसे हो सकती है नेचर के बीच में, ब्यूटी ऑफ नेचर को एनहांस करने के लिए, ये इसकी आपकी एक थीम है जो कि इस स्टोरी में हम आगे और देखेंगे। चलिए हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तानिया रमोला और उनके समूह ने खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए पढ़ाई कर के साथ पहाड़ी पर पहुंच गए जो कि टिहरी के ऊपर था। आधे घंटे तक चढ़ने के बाद वे एक पठारनुमा जगह पर पहुंचे जहां से शहर, नदी और बांध को देखा जा सकता था। इस दौरान हाल ही में बांध के नीचे मिट्टी को खोदने का काम शुरू हो चुका था। कोई बता पाएगा बांध का मतलब क्या होता है? यस मैम, डैम। वेरी गुड। सो डैम होता है। डैम क्या करता है? डैम किस लिए बनाया जाता है नदी पे? मैम, डैम इसलिए बनाया जाता है कि जो ज्यादा पानी आता है उसको रोका जा सके। जैसे कि वे गांव या शहरों के अंदर नहीं आ सके और फ्लड लाइक सिचुएशन नहीं हो, इसलिए डैम बनाया जाता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इस दौरान हाल ही में बांध के लिए मिट्टी को खोदने का काम शुरू हो चुका था, लेकिन पहाड़ों को खोद कर नदी के पानी को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए चौड़ी सुरंग को खोद दिया गया था। वहां से देखने पर पता चलता था कि अभी भी नीचे पुराना शहर घाटी में फैला हुआ था और दूर से देखने में वो काफी आकर्षक और मन मोह लेने वाला लगता था। आप में से कितने बच्चे नदी के किनारे कभी घूमने गए हैं? कोई गया है नदी के किनारे घूमने? यस मैम। यस तो कैसा लगता है आपको वहां पे? मैम मैम, अच्छा लगता है। मैम अच्छा सुना। बहुत अच्छा लगता है। तो स्कूल की जिंदगी और गांव की जिंदगी, क्या डिफरेंस है दोनों में? आप गांव में रहना चाहते, पढ़ाई नहीं करना मैम चाहते, गांव में स्कूल में रह के? इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है और शहर में उतनी ही अच्छा होता है, लेकिन हम जो बहुत सारी चीजों से घिरे होते हैं। गांव में हम नेचर को देख सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, जो हमें बहुत लुभाती है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तलत, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, हमें गांव के स्कूल में हमें बहुत सारा मतलब हम नेचर को फील कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुला रहता है और वहाँ ना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और ना मतलब ज़्यादा शोर शरार भी नहीं रहता। पर शहरों के स्कूल में बहुत ज़्यादा हमें ग्रीनरी नहीं मिल पाती है। स्वच्छ हवा नहीं मिलती, एयर क्वालिटी बहुत ही खराब हो गई है। तो यस, गांव में भाईचारा बहुत ज्यादा होता है, यस आपस में मैम, एक दूसरे, पॉल्यूशन। यस, एक दूसरे में लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब पता चलता है। जो शहर में कई बार हमें अपने पड़ोसी का नाम भी, नेबर्स का नाम भी नहीं पता होता है। तो प्यार मोहब्बत से सब लोग रहते हैं, आपस में सुख दुख सब कुछ एक साथ शेयर करते हैं। मिस रमोला ने जवाब में कहा, हाँ, पूरा का पूरा डूब जाएगा। घंटा घर और पुराना किला भी, लंबा बाजार, मंदिर, सभी स्कूल, जेल और सैकड़ों घर जो जहां है वो भी डूब जाएंगे। उनके साथ ही सैकड़ों मीलों तक ये घाटी भी पानी में समा जाएगी जहां पर रह रहे हजारों की संख्या में लोगों को इस जगह में जाना होगा। जी हाँ, इन सभी को कहीं और बसाया जाएगा, बीना ने कहा। लेकिन ये शहर तो सैकड़ों वर्ष से यहीं पर था।
क्या यह सच नहीं है कि ये लोग बांध के बगैर ही बहुत खुश थे? मुझे लगता है कि वे खुश थे, लेकिन ये बांध महज उनके लिए ही नहीं है, बल्कि उन लाखों लाखों लोगों के लिए भी है जो नीचे और समतल मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। लोग सोचते हैं कि उनके एरिया में पानी नहीं आ रहा है, उनके सिटी में या गांव में पानी नहीं आ रहा है, तो बांध की जरूरत, डैम की जरूरत नहीं है। बट एक्चुअली क्या होता है, जो नीचे के एरिया में जगह होती है, शहर होते हैं, गांव होते हैं, वहां पे पानी आने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। इसलिए डैम की जरूरत हमें जरूर होती है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमेशा सिक्के के दोनों पहलू देखो। एक पहलू है कि मैं क्या करना चाहता हूं, करना चाहती हूँ, और दूसरा पहलू बाकी लोगों के लिए क्या अच्छा है। तो इसलिए कुछ भी सोच के क्वेश्चन करने के से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि सबकी भलाई किस चीज में है। हाँ अनन्या, आप कुछ कहना चाहेंगे? बेटा आप म्यूटेड है, आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी अनन्या, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ शायद आपके ऑडियो के साथ प्रॉब्लम है। और इसका कोई मतलब नहीं कि इस जगह का क्या हो जाएगा। स्थानीय लोगों को कहीं और नए मकान दे दिए जाएंगे। मिस रमोला अपने आप को बचाने की स्थिति महसूस करने लगी थी, और इसलिए उन्होंने मुद्दे को ही बदलने का निर्णय ले लिया। सभी लोगों को भूख लगी होगी, भोजन का वक्त हो गया है। बीना खामोश रही। उसे नहीं लगता था कि स्थानीय लोग यहाँ से कहीं और जाना चाहेंगे, और उसने सोचा कि ये तो अच्छा है कि उनके गांव में कोई बड़ी नदी नहीं, बल्कि एक छोटी धारा ही है। वाकई इस तरह से किसी एक शहर और सैकड़ों गांव की निस्तेनाबूद करके गर्म और धूल भरे मैदानों में बसा देना बीना के लिए इसे स्वीकारना असहनीय था। हम कई बार ये देखते हैं कि जिस जगह पे हम रहते हैं उससे हमें काफी लगाव हो जाता है, तो उसको हम छोड़ के नई जगह पे जाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस कहानी में भी यही बोला गया है, लोगों को बहुत घबराहट शुरू हो गई थी कि वो पानी के कारण दूसरी जगह में उन्हें बसाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है। वह बोली, यह अच्छा है कि मैं टिहरी में नहीं रहती हूँ। हालांकि उसे पता नहीं था कि अब तक सभी जानवर और पक्षी उस जगह को छोड़कर जा चुके थे। तेंदुआ भी उनमें से एक था। वे रंग बिरंगे भीड़ भाड़ वाले उस बाजार से गुजरने लगे, जहां पर फल बेचने वाला चांदी के व्यापारी के इर्द गिर्द बैठकर व्यापार करता था, और फुटपाथ पर बैठकर बेचने वाला विक्रेता छतरी से लेकर कांच की चूड़ियों तक सब कुछ बेचते थे। गौरैया अनाज की बोरियों पर हमला कर दिया करती थी, बंदर केले लूट लेते थे, और आवारा गाय और कुत्ते कूड़ेदान के इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन इन सब की और किसी का भी ध्यान नहीं गया। रेडियो से गीत संगीत जोरों से बज रहे थे। बसें जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी। इस शोरगुल को और बढ़ाने के लिए सोनू ने एक सीटी खरीद ली और बजाने लगा, लेकिन मिस्टर मोला ने उसे सीटी को दूर रखने और बजाने के लिए मना किया। बीना ने अपने पास अलग से 10 रुपए रखे हुए थे, जिसका इस्तेमाल उसने अपनी माँ के लिए सिर पर बांधने वाला एक सूती स्कार्फ को खरीदने में किया। जैसे ही वे खाने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में दाखिल होने वाले थे, तभी प्रकाश और उनके साथी भी पहुंच गए। हालांकि अभी भी श्रीमान मणि का कोई अता पता नहीं था। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि श्रीमान मणि इन सब बच्चों को लेकर के ऊपर टिहरी के पास बांध देखने के लिए ले गए थे, और ये लोग ट्रैक्टर में बैठ के और एक छोटी बस में बैठ के वहां पे गए थे। ये इनकी एक पिकनिक थी जो स्कूल की तरफ से अरेंज हुई थी, क्योंकि टीचर्स उन्हें लेके जाना और दिखाना चाहते थे कि बांध कैसे बना है। और अभी तक इन बच्चों ने कहीं पर भी वो नहीं गए थे, बस में और ट्रैक्टर में बैठने का भी ये उनका पहला ही अवसर था। और श्रीमान मणि जो है वो उनके टीचर थे। प्रकाश ने कहा वह अपने किसी रिश्तेदार के संपर्क में आ गए होंगे। उनके रिश्तेदार सभी जगह मौजूद हैं। चावल और दाल का सादा भोजन करने के बाद उन्होंने श्रीमान मणि को ढूंढने के लिए बाजार का एक चक्कर लगाया, पर वह कहीं दिखाई नहीं दिए। आखिरकार
जब वे उनकी तलाश को छोड़ने वाले ही थे कि तभी अचानक उन्हें श्रीमान मणि एक गली से कंधे पर एक बड़ा सा बोरा लटकाए हुए दिखाई दिए। प्रकाश ने उससे पूछा, सर आप कहाँ रह गए थे? हम आपको हर जगह हर तरफ ढूंढ रहे थे। अचानक उन्हें देखकर श्रीमान मणि के चेहरे पर विजय होने का भाव आ गया। उन्होंने हाफते हुए कहा, इस बोरे को ले चलने में मेरी मदद करो। प्रकाश बोला, सर आपको बहुत ज्यादा आलू खरीद लिए हैं। जवाब में श्रीमान मणि बोले, बेटा ये आलू नहीं है बल्कि डहलिया का बल्ब है। जब वे वापस नौटी पहुंच गए तब शाम ढल चुकी थी। श्रीमान मणि अपने डहलिया के बल्ब को बोरे से अलग होने के लिए तैयार ही नहीं थे और इस तरह उन्हें प्रकाश और बहुत से लड़कों के साथ ट्रक के पीछे बैठ के आना पड़ा था। बेटा बीच में अनम्यूट मत करिए, प्लीज रिमेन म्यूटेड। वापस आते वक्त बीना अपने आप को ज्यादा बीमार नहीं महसूस कर रही थी। पहाड़ की ओर जाना निश्चित रूप से नीचे की ओर जाने से बेहतर था, लेकिन जब बस नौटी पहुंची तो बहुत से बच्चों को दूर दराज के गांव में रहते थे, उनके लिए घर जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उस रात लड़के अलग अलग घरों में रुके, जबकि लड़कियों के लिए स्कूल के बरामदे में बिस्तर लगाया गया। रात गर्म और शांत थी। बरामदे को रोशन करने वाले इकलौते बल्ब के चारों ओर बड़े बड़े पतंगे उड़ रहे थे। पतंगों को गिनते गिनते जल्द ही सोनू को नींद आ गई, लेकिन बीना कुछ देर तक जगती रही तथा रात में आती हुई आवाजों को सुनती रही। एक नाइजार टोंक टोंक करते हुए झाड़ियों में घुस गई थी और जंगल से कहीं दूर एक उल्लू धीरे धीरे हुटिंग कर रहा था। हिरन की एक तीखी और तेज आवाज नदी की ओर से घाटी की तरफ आ रही थी। सियार चिल्लाने में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी संख्या पहले से कहीं अधिक हो गई है। हिरन के भौंकने की आवाज को सुनने वालों में सिर्फ बीना ही नहीं थी। तेंदुए जो चट्टान पर पूरी लंबाई से अपने आप को फैलाया हुआ था, उसने भी आवाज सुनी। फिर तेंदुए ने अपना सिर उठाया और धीरे से उठ गया। हिरन तेंदुए का स्वाभाविक शिकार थी, लेकिन अब वहां वे बहुत नहीं बचे थे, क्योंकि बांध के किनारे के जंगल को बांध ने अपने अंदर समा लिया था। और यही कारण था कि तेंदुए ने गांव के पास रहने वाले कुत्ते और मवेशियों पर हमला करना शुरू कर दिया था। जैसे ही भौंकने वाले हिरन की चीख और करीब सुनाई देने लगी, तेंदुए तेजी से अंधेरे के बीच नदी की ओर जहां हिरन मौजूद था बढ़ने लगे। क्या आप लोगों को लगता है कि जंगल काट काट के जो आजकल या खेतों की जमीन को काट करके आजकल मकान बन रहे हैं या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, वो अच्छी हो रही है? ऐसा होना चाहिए? नो मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके प्रोज एंड कॉन क्या है, फायदा नुकसान क्या है? मैम देखिए, इसका फायदा नहीं है, पर इसका नुकसान है कि सबसे पहला तो हमारे नेचर को हार्म होता है और पॉल्यूशन भी इससे बहुत होता है। और अगर हमारा ऐसा ही हुआ तो फिर सारे अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो हमारे को ऑक्सीजन मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो चूंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है तो कहीं तो लोग रहेंगे। मैम पेड़ पौधे काटने से पहले हमको कुछ पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यस सर्टेनली, बट जगह तो अब बची नहीं है, आप लगाएंगे कैसे? एक छोटी सी कहावत है, नेचर हैज गिवन अस एवरीथिंग फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। मकान जगह हमारे पास बहुत है, बट कुछ लोग के पास एक मकान है, उन्हें दो चाहिए, फिर तीन चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कई सारे मकान ले लेते हैं। साथ साथ वो अपने फार्म हाउसेस बनाते हैं। हर शहर में उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा होने के कारण जिनको एक्चुअली मकानों की जरूरत है वो अब क्या करें? तो इसलिए अब वो खेतों की जमीन और
जंगल की तरफ जा रहे हैं और वहां पे मकान बनाना शुरू कर दिए। पहले सिटीज में मेन एरिया में लोग रहते थे, अब धीरे धीरे वो सिटी के बाहर जाते जा रहे हैं। तो इससे हमारी खेती पे असर आ गया है। अब खेती पे असर आया तो उसका नुकसान क्या हुआ? सारी फूड प्रोडक्ट्स, ये जो भी खाने पीने की चीजें वो महंगी होती चली गई। महंगे होने के बावजूद उतनी अच्छी और क्वालिटी वाली चीजें हमें नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा कि नाले के किनारे या आसपास लोग सब्जियां उगा रहे हैं, और वो सब्जी जब हम खा रहे तो नेचुरली हमें हेल्थ इम्पैक्ट्स भी हो रहे हैं, प्रॉब्लम भी हो रही है, पानी भी साफ नहीं है, कीड़े नहीं लगे इसलिए बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज किया जा रहा है। और जो नेचुरल ग्रोथ की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। जो पहले इजीली अवेलेबल थी अब इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि बहुत से लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ जुगजीव सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। जानवरों में भी बहुत फर्क पड़ा है। सभी लेपर्ड आजकल सिटीज में मिल रहे हैं, क्योंकि हमने उनके घर पे जाके उनको वहां से निकाल दिया है। तो यस। ये भी बहुत चिंता का विषय है। और बहुत डिजीज ऐसे ही हो रही हैं, क्योंकि काफी बाहर आ रही हैं चीजें जो नहीं होनी चाहिए, बाहर जंगल में होनी चाहिए, बाहर आ रही हैं। काफी वायरस भी इसी वजह से हो रहे हैं। पर ये बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, ये हर डिबेट चलता रहेगा। बट आई थिंक आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि नेचर इज गिवन अस फॉर आवर नीड्स बट नॉट फॉर ग्रीड. So that is, I think, the heart of the matter. Very well. I mean, it's a good concept. Right? थैंक यू सो मच सर। तो लोग कहते हैं कि जंगलों के जो जानवर है वो हमारे सिटीज में आ रहे हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम उनके घर में चले गए तो वो बेचारे क्या करें? तो इसलिए वो सिटीज में आना उनके लिए मजबूरी हो गई है। वो भी तो कुछ खाएंगे, नेचर की साइकिल कैसे चलेगी? तो नेचर की साइकिल के लिए हम ही कहीं ना कहीं दोषी है। हम उनके घर में जा रहे तो नेचुरली वो भी बाहर आएंगे और हम परेशान होंगे। इसलिए नेचर की साइकिल से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नेचुरल डिजास्टर्स भी इसीलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि हम ही पानी को रोक रहे हैं, हम ही पानी में दूसरी चीजें करके वहां मकान बना रहे हैं। तो नेचुरली वो जमीन उतनी सॉलिड तो रही नहीं। तो बिना सॉलिड जमीन पे जब हम मकान बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, आपके मॉल्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगी ही। तो नेचर को हम ही खराब कर रहे हैं, उसका बैलेंस हम खराब कर रहे हैं। चलिए चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। जून के महीने के शुरुआती दिन थे और पहाड़ सूखे और धूल से भरे हो चुके थे और जंगल में आग लग चुकी थी, जिससे वहां पर फैली झाड़ियों और पेड़ों में आग लगने लगी थी। इस आग में पक्षी और जानवर जलकर मर रहे थे। देवदार के राल के कारण ये पेड़ और भी ज्यादा धू धू करके तेजी से जल रहे थे और हवा के झोंके पेड़ों से चिंगारी को लेकर सूखी घास और पत्तियों में लगे जा रहे थे। फॉरेस्ट फायर जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं, छोटे ड्राई लीव्स पे बहुत जल्दी लग जाता है और एक बार लगता है तो वो पूरे पूरे जंगल में लगता ही जाता है, ताकि पुरानी आग के बुझने से पहले ही नई भड़क उठी थी। सौभाग्य से बीना और गांव देवदार के इलाके में नहीं आता था, जिस कारण से वह आग उनके गांव तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन नौटी 3 दिनों तक इस लगी आग की लपेट में घिरा रहता और इस कारण से बच्चों को स्कूल से दूर रहना पड़ा था। और फिर जून के अंत में मॉनसूनी वर्षा शुरू हो गई, जिसके चलते जंगल में लगी आग का अंत हो गया। मॉनसून 3 महीने तक रहता था और इस दौरान हिमालय का निचला हिस्सा आने वाले 3 महीनों के दौरान बारिश, धुंध और बादलों के सरोवर में डूब जाने वाला था। जून महीने की पहली बारिश उस वक्त हुई जब बीना, सोनू और प्रकाश स्कूल से घर लौट रहे थे। इस धूल भरे रास्ते पर पड़ी बारिश की कुछ बूंदे ने उन्हें उत्साह से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया और फिर बारिश तेज हो गई और धरती से अद्भुत खुशबू उठने लगी। बीना ने कहा, दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू। ऐसा लगा मानो घास, पक्षी, पेड़, फसल, सभी चीजों में अचानक नया जीवन आ गया। यहाँ तक कि पेड़ों के पत्ते भी चमक के साथ नए लगने लगे थे। बारिश के उस पुराने हफ्ते में बीना और सोनू ने फलिया, मक्का और खीरे लगाने में अपनी माँ की मदद की। जब
कभी भी बारिश तेज हो जाती थी तो उन्हें बारिश से बचने के लिए घर के भीतर भागना पड़ता था। यदि वे बारिश में काम करते थे तो उनके नंगे पैरों पर नरम मिट्टी चिपक रहती। प्रकाश के पास अब एक काला कुत्ता था जिसके एक कान उठा हुआ था और दूसरा कान लटका हुआ था। उसका कुत्ता सभी लोगों के रास्ते में आ जाता था। वह गाय, बकरियों, मुर्गियों और इंसानों पर भौंकता रहता था। हालांकि उसके भौंकने से उनमें से कोई भी नहीं घबराता था या डरता था। प्रकाश उसके बारे में बताया कि वह बहुत चतुर कुत्ता था, लेकिन उसकी इस बात पर किसी को यकीन नहीं होता था। प्रकाश यह भी कहता था कि वह तेंदुए से गांव को बचाएगा, लेकिन दूसरे लोग कहते कि तेंदुए सबसे पहले इस कुत्ते को ही ले जाए। अर्थात वह कुत्ता बिना कोई वक्त लगाए मिस्टर स्पॉट के जबड़े में सीधा चला जाएगा। नौटी में मिस रोमोला अपने कमरे में एक ऐसा स्थान ढूंढ रही थी जहां की गीलापन न हो। ये एक पुरानी इमारत थी और जगह जगह से पानी चू रहा था। चूते हुए पानी को इकट्ठा करने के लिए यहाँ वहां फर्श पर मग और बाल्टी बिखरी हुई थी। श्रीमान मणि ने अपने सभी आलुओं को खोद कर निकाल दिया और उसे उन्होंने उन दोस्तों और पड़ोसियों में बांट दिया था जो उन्हें खाना खिला दिया करते थे। वह बगीचे में सभी जगहों पर डहलिया बल्ब लगाकर उनके जीवन को रमणीय बना रहे थे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, मेरे खेत में नाना प्रकार के रंग बिरंगे डहलिया खिलेंगे, बस अगस्त के अंत तक इंतजार करो। उनकी बहन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, साही से सावधान रहना, यह डहलिया के बल्ब भी खाते हैं। श्रीमान मणि ने खड्डों का निरीक्षण किया जिसे वह बाढ़ के दौरान नहीं कर पाते थे और पाया कि सब कुछ ठीक ठाक अपनी जगह पर थे। प्रकाश ने अपना काम बखूबी के साथ किया। जब वह बच्चों ने नदी के धारे को पार किया तो पाया कि धारे का पानी लगभग 1 फीट बढ़ चुका था। आसपास के छोटे छोटे झरने फूट पड़े थे और धारे के पानी में तब्दील हो गए थे। किनारे पर फर्न उग चुके थे, मेढक टर टर कर रहे थे। प्रकाश और उसके कुत्ते ने धारे को तेजी से पार किया। बीना और सोनू ने सावधानी के साथ पानी की धारा को पार किया। पानी का प्रवाह अब काफी तेज था और लगभग उनके घुटनों तक आ रहा था। फिर जब एक बार वे नदी को पार कर चुके थे तो वे तीनों रास्ते पर इस सोच के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगे कि कहीं अचानक भारी बारिश में वे फंस न जाएं। I request everyone to be muted. Vivo V2348, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज अनम्यूट मत करिए। अनन्या प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। थैंक यू। जब तक वे स्कूल पहुंचे उन सभी के पैरों में 2 या 3 जोकें चिपक चुकी थी। बरसात के मौसम में जोक सबसे ज्यादा परेशान करती थी। यहाँ तक कि तेंदुए को भी जोकें पसंद नहीं आती थी। तेंदुआ जब भी लंबी घास पर लेटता था तो उसके पंजों और चेहरे पर जोक चिपक जाती थी। ये जो जोक है एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो आपका ब्लड ले लेता है उसको, और उसके कारण आपको बहुत ही ज्यादा ट्रबल होता है। इसलिए जोक जो है इससे सब लोग परेशान रहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके पास आए। एक दिन जब बीना, प्रकाश और सोनू नदी को पार करने वाले ही थे तो उन्हें धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी जो पल पर बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी ओर मौजूद पहाड़ी को देखने पर उन्होंने देखा कि कई पेड़ कांप रहे थे, बाहर की ओर झुक रहे थे और नीचे गिर रहे थे। मिट्टी और चट्टाने पत्थर पहाड़ से निकलकर नाले में जाकर समा रही थी। सोनू ने चिल्लाकर कहा, भूसंकलन।
आपको पता है भूसंकलन क्या होता है? ओके, लैंडस्लाइड्स का नाम सुना आपने? Yes, ma'am. क्या होता है लैंडस्लाइड? मैम जब बारिश और ना अ, बारिश की वजह से जब पहाड़ के नीचे की जमीन खिसकने लगती है और गिर जाती है उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। एग्जैक्टली, पहाड़ों पे ये बहुत ज्यादा होता है। मिट्टी चूंकि बहुत सॉफ्ट हो जाती है, पेड़ उस मिट्टी के सॉफ्टनेस के कारण उनकी जड़ें हिल जाती हैं, और जो पहाड़ होते हैं वो भी निकलने लगते हैं वहां से। छोटे छोटे पत्थर या बड़े बड़े पत्थर भी अपनी जगह से हिल जाते हैं। तो इसलिए नेचर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सो दैट इज द मॉडल ऑफ द थिंग। हम जब भी नेचर के साथ कुछ खिलवाड़ करते हैं, इस तरीके की परेशानी हो जाती है। बीना ने कहा, इसमें हमारे रास्ते को खत्म कर दिया, अब और आगे मत बढ़ो। एक बार फिर से भयानक गर्जन उस वक्त हुई जब चट्टाने, पेड़ और झाड़ियां पहाड़ी से निकलकर दूर नीचे जा गिरे। प्रकाश का कुत्ता जो आगे चला गया था, अपनी दुम दबाए दौड़कर वापस आ गया। इसके बाद वे तीनों तब तक अपनी जगह से नहीं हिले जब तक कि चट्टाने गिरना बंद नहीं हो सकी। पक्षी बेतहाशा चिल्लाते हुए उस जगह पर चक्कर लगाने लगे। एक डरा और सहमा हुआ हिरन चिल्लाता हुआ उनके पास से भागता हुआ गुजर गया। इस घटना के बाद वे अगले 3 दिन तक स्कूल नहीं जा पाए, और बीना को यह डर सताने लगा कि शायद वह वार्षिक परीक्षा न दे पाए। हालांकि प्रकाश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर उसको अपने आप को बेचारा दिखाना पसंद नहीं था। उनका रास्ता बह गया था, इसलिए उसने पहाड़ पर अपनी खोज इसलिए उसने पहाड़ पर अपनी खोज को उस वक्त तक जारी रखा जब तक कि उसने पहाड़ के बीच से गुजरता हुआ एक दूसरा रास्ता ढूंढ नहीं निकाला। आखिरकार वह इसमें सफल हुआ। जब उसे एक रास्ता मिल गया जहां से बकरियां जाया करती थी, वह रास्ता नौटी के पास एक दूसरे रास्ते से जुड़ जाता था। हालांकि वह रास्ता पहले वाले से 1 मील लंबा था, पर बीना को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। मूसलाधार बारिश के चलते ठंडक भी काफी बढ़ गई थी। इस नए रास्ते को एक ही दिक्कत थी कि वह तेंदुए की मात के करीब से गुजरता था। तेंदुए का मात इज द डेन, जहां पे तेंदुआ रहता है। बांध क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद से तेंदुए ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। एक दिन प्रकाश का कुत्ता जोर जोर से भौंकते हुए उनसे आगे निकल गया। फिर वह भीगी बिल्ली की तरह रुआसी सूरत बनाकर वापस भाग आया। सोनू ने कहा, वह हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागता ही रहता है, लेकिन पल भर के लिए वह भी कुत्ते के बारे में समझ गया कि उसको क्या परेशानी हो रही है। जैसे ही उन तीनों ने एक मोड़ को पार किया, तो सोनू की नजर सामने तेंदुए पर गई, जो कि उनके रास्ते में खड़ा था। वे बेसुध हो गए थे कि उन्होंने अपने आप को भागने में बिल्कुल असमर्थ पाया। वह एक ताकतवर मजबूत जानवर था। उनके गले में से एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज निकली। ऐसा लग रहा था कि वह बस हम पर हमला करने को तैयार है। वे सीधे बूथ बनकर खड़े हो गए थे। वे हिलने या मुंह से एक शब्द निकालने से भी भयभीत थे, और शायद तेंदुआ भी उन्हें देखकर उतना ही अचंभित था। वह कुछ देर के लिए उन्हें घूरता रहा, फिर रास्ते के उस पार बाज के जंगल में चला गया। सोनू कांप रहा था। बीना अपने दिल को धड़कन को सुन रही थी। प्रकाश केवल हकला कर कह सका, क्या तुमने देखा कि वह कैसे उछला था? क्या वह दिखने में सुंदर नहीं था? उस पूरे दिन तक वह अपनी घड़ी को देखना भूल गया था। इसके बाद कुछ ही देर में सोनू वहां रुका
और उसने अगली पहाड़ी पर चट्टान के पीछे टुकड़े की ओर इशारा किया। तेंदुआ उससे काफी दूर आसमान की ओर मुंह करके खड़ा हो गया था। वह बहुत ताकतवर और तेजस्वी लग रहा था। उसके बगल से दो छोटे शावक खड़े हुए थे। सोनू ने उत्साह से कहा, देखो, उन दोनों को देखो। प्रकाश बोला, अच्छा, तो यह मादा है न कि नर? बीना ने कहा, इसलिए वह बार बार शिकार कर रही थी। आखिरकार उसे अपने शावकों को भी खाना खिलाना था। वे कुछ मिनटों तक वहीं खड़े होकर तेंदुए और उनके बच्चों को निहारते रहे। इस दौरान तेंदुए के परिवार ने उन तीनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। प्रकाश ने बताया कि उसे पता है कि हम वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह इस वक्त से वाकिफ था कि हम उसे और अधिक बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले थे। हम भी तो शावक हैं, सोनू ने कहा। बीना ने कहा, हाँ, और अभी भी हम सभी के लिए बहुत जगह है। यहाँ तक कि जब बांध बंद कर तैयार हो जाएगा, तब भी तेंदुए और इंसानों के लिए जगह बचेगी। स्कूल की परीक्षा हो चुकी थी और बारिश भी लगभग अपनी समाप्ति की ओर थी। भूसंकलन भी काफी साफ किया जा चुका था और बीना, प्रकाश और सोनू फिर से उसी पानी के नाले को पार कर रहे थे। सितंबर का अंत होने तक हवा बहुत ही ठंडी हो गई थी। प्रकाश अब बांसुरी बहुत अच्छा बजाने लगा था और स्कूल आते और घर वापस जाते हुए बांसुरी बजाया करता था। इसलिए अब उसकी नजर उसकी घड़ी पर नहीं पड़ती थी। एक दिन उसने श्रीमान मणि के घर के आगे कुछ लोगों का समूह खड़ा दिखाई दिया। बीना को आश्चर्य हुआ, ये क्या होगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि कहीं फिर से वो गायब नहीं हो गए। सोनू ने कहा, शायद वह बीमार हो। प्रकाश ने कहा, हो सकता है कि वहां शाही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में श्रीमान मणि के द्वारा अपने खेत में लहराया गया पहला डहलिया खिल गया था और उस खिले हुए डहलिया को देखने आधा गांव उनके घर के आगे उमड़ कर आ गया था। और एक बहुत बड़ा लाल रंग का डबल डहलिया था। वह इतना भारी था कि उसे लाठी के सहारे देना पड़ रहा था। इतने शानदार फूल को इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। श्रीमान बनी बहुत ही खुश थे और आने वाले सप्ताह में उनका मूड और बेहतर होने लगा था। इसके पीछे मुख्य कारण था कि श्रीमान के पास लाल, पीले, बैंगनी, सफेद रंग के बटन, पॉम्पस, चित्तीधारी, धारीदार डहलिया के फूल खूब खिलने लगे थे। एक डहलिया तानिया रमोला की मेज पर भी सजा कर रखा गया था। जब श्रीमान मणि का मिस रमोला के साथ रिश्ता मिलनसार हो गया था और दूसरा हेडमास्टर के कमरे में भी रोशन कर रहा था। इस घटना के एक हफ्ते बाद, जो कि स्कूल के सत्र का लगभग आखिरी दिन था, बीना, प्रकाश और सोनू अपने घर वापस जाते हुए बड़े होने के बाद वे क्या करेंगे इस पर आपस में बातें कर रहे थे। बीना ने कहा, मैं सोचती हूँ कि मैं टीचर बनूंगी। मैं बच्चों को जानवरों और पक्षियों और पेड़ के फूलों के बारे में पढ़ाऊंगी। प्रकाश ने सहमति से कहा, हाँ, गणित पढ़ने से तो बेहतर ही है। सोनू बोला, मैं तो पायलट बनूंगा और मिस रोमोला के भाई की तरह हवाई जहाज उड़ाना है। और प्रकाश, तुम क्या करोगे? बीना ने प्रकाश से जानना चाहा। प्रकाश बस मुस्कुराया और बोला, शायद मैं भविष्य में बांसुरी वादक बन सकता हूँ। और फिर उसने बांसुरी को अपने होठों से लगा लिया और मधुर वादन करने लगा। बीना ने कहा, बेशक, दुनिया को बांसुरी वादक की बहुत ही जरूरत है। वह कहते हुए उसने बगल में चलने लगी। मादा तेंदुआ एक भौंकते हुए हिरन का पीछा कर रही थी। जब उसने बांसुरी और बच्चों की आवाज सुनी तो वह रुक गई। उसके बच्चे तेजी से बड़े हो रहे थे, लेकिन उस लड़की और दोनों लड़कों की उम्र कोई ज्यादा नहीं लग रही थी। इस दौरान उन तीनों ने अपना पसंदीदा गाना फिर से शुरू किया। वह गाना था, 5 कोस और दूर जाना है, हम बारिश और बर्फ से गुजरते जाते हैं। नदी को पार करना है, पहाड़ को पार करना है, हम उसे 4 कोस की दूरी को और तय करना है।
भौंकते हुए हिरण को फिर से तलाशने से पहले तेंदुए ने उन तीनों बच्चों को गुजरने का इंतजार किया। यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी से मुझे ये समझ में आया कि हम जानवरों से डरते तो जरूर है, लेकिन जानवर कहीं ना कहीं हमारी इज्जत भी करते हैं। उन्हें भी पता है कि कौन उनका नुकसान करेगा, कौन उनका नुकसान नहीं करेगा। और ये कहानी एक क्लियर एग्जाम्पल है इस बात। तेंदुआ जानवरों का भक्षक था, वो जानवरों को खाता था, अपने बच्चों के लिए लेके जाता था, बिकॉज दैट इज हाउ द नेचर वर्क्स, द साइकिल वैसे ही वर्क करती है। बट छोटे बच्चों पर उसने अटैक नहीं किया। उसने हमेशा अपनी प्रायोरिटी दी कि वो जो दो तीन छोटे बच्चे थे वो डर के खड़े भी हो गए थे, तो जितना बच्चे डरे थे उतना ही तेंदुआ भी डरा था। पर दूसरी बार मिलने पे, तीसरी बार मिलने पे उन्हें उसे हमेशा रास्ता दिया और उन्हें आगे बढ़ने दिया, उन पर अटैक कभी भी नहीं किया। तो ये कहानी हमें ये और भी समझाना चाहती है कि नेचर के साथ रहिए, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करिए, और साथ में लोग हैं जो आपकी रक्षा करेंगे। आप अगर किसी जानवर पे अटैक नहीं करोगे तो वो भी आप पे अटैक नहीं करेगा। तो कोई कुछ कहना चाहता है इस बारे में, या किसी का कुछ एक्सपीरियंस रहा है या कभी सुना है कि उनके पेरेंट्स ने इस मामले में कुछ बात करी है? कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा इस पे? चलिए कोई बात नहीं, 12:30 का समय हो गया है, तो हमारा सेशन ये 10:30 से 12:30 ही रहता है। आप लोग आज दो कहानियां आपने सुनी है, दो हमने रीडिंग सेशंस कंडक्ट किए हैं। आप अपने मन के विचार, अपने भाव को हमें लिखकर। बेटा समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम हम चाह रहे थे, हमारा मैम डॉग पीछे पड़ गया था, हमने कुछ कही भी नहीं थी। बहुत अच्छा, अटैक कर। वेरी गुड। तो अब आप मुझे राइटिंग में आपके मन में जो भी ये चैप्टर पढ़ के आया, जो भी आपके भाव आए, उसको आप दीजिए और हम आपको पब्लिश करेंगे। जैसे कि आपने देखा है, जिन भी बच्चों ने लिख के दिया है उनका राइट अप पब्लिश होता है और हम उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं उनको रीड करने के लिए। अगर वो बच्चा एब्सेंट है तब जो भी अवेलेबल बच्चे हैं, जो जिन भी अटेंड कर रहे हैं, उनमें से कोई भी आगे आके उसको पढ़ सकता है। तो आप आइए, अपने रिफ्लेक्शन को पढ़िए और आगे हमारे सेशन को बढ़ाइए। जरूरी नहीं आपको रिफ्लेक्शन लिखना है, आप डूडल कर सकते हैं, आप अपनी कोई ड्राइंग हमें भेज सकते हैं। आप चाहो तो कोई नाटक के द्वारा भी उसे बता सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, जैसे भी आप चाहें वैसे आप हमें भेज सकते हैं। हाँ जी वंश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम तेंदुआ क्या होता है वो बताओ ना। बेटा आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आई, आप फिर से तेंदुआ बोलेंगे? लेपर्ड। लेपर्ड? आप लेपर्ड की ड्राइंग भेज सकते हैं मुझे। तेंदुआ आई थिंक पूछ रहे तेंदुआ क्या है, आई थिंक तेंदुआ अच्छा, लेपर्ड तेंदुआ है। क्या है? तेंदुआ इज लेपर्ड। आप लेपर्ड की ड्राइंग भी बना सकते हैं, आप ये जंगल का सीन भी बना सकते हैं। आपने कुछ तो इमेजिन किया ही होगा अभी तक। जब हम रीडिंग करते हैं, अनन्या आप स्टोरी सुनते हैं, तो हम इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अपनी इमेजिनेशन के साथ कोई ड्राइंग भी भेज सकते हैं। और कोई प्रश्न है आपका? अनन्या आप म्यूट पे हैं। सर अनन्या अनम्यूट। का माइक वर्क नहीं कर रहा है। शी ट्राइड टू टॉक मेनी अ टाइम्स बट समहाउ नहीं हो पा रही बात। कुछ प्रॉब्लम है उसके माइक में। हाँ नहीं हो रही, फिर आवाज नहीं आ रही आपकी अनन्या, आपका माइक नहीं चल रहा है। मैंने अनन्या से कहा था कि आप चैट बॉक्स में लिखे, पर समहाउ कुछ प्रॉब्लम है, शायद वो बता नहीं पा रही है। नहीं आ रही बेटा आपकी आवाज अनन्या। तो ठीक है, इसके साथ ही हम आज का सेशन खत्म करते हैं। आपके स्कूल में कोई मैम वन टीचर? क्विक क्वेश्चन, आपका जो आपको रिफ्लेक्शन भेजनी है कैसे भेजनी है? वही मैं अभी बताना चाह रही थी। आपके स्कूल में आपके स्कूल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो हमारे माई गुड स्कूल के कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप उनको भेज सकते हैं और वो मुझे भेज देंगे। दिस इज वन वे। सेकेंड वे, मैंने आपको शुरू में जॉय ऑफ लर्निंग डायरीज का पेज खोल के दिखाया था, वहां पे मेरा ईमेल आईडी और साथ में फोन नंबर है, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। आप सबके लिए मैं अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, वहां से कॉपी कर सकते हैं।
तो ये 2-3 तरीके हैं जिस तरीके से आप मुझे भेज सकते हैं। आप चाहो तो अभी ईमेल आईडी को कॉपी करके रख लीजिए, और चाहिए तो आप अपने टीचर कोऑर्डिनेटर को दे दीजिए, वो आप सबके एक क्या स्कूल कॉपी के करने के लिए हिसाब बोल रही हूँ? क्या क्या समझे अभी पूछेंगे? हाँ, 2 घंटे में। मुझे समझ में नहीं आया कौन क्या कह रहा है। ठीक है, आई होप कुछ और क्वेश्चन नहीं है। अगर है तो प्लीज आप बताइए, वरना मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। ठीक है, तो आप रिफ्लेक्शन हाँ लिख जी लिए, आप भाविया, यू ड्राइंग कैन भी भेज सेंड योर सकते हैं। ड्राइंग इन द ग्रुप। हाँ जी सर और मैंने बताइए। जॉय ऑफ लर्निंग डायरीज और यूट्यूब के भी एड्रेस डाल दिए थे चैट में। हाँ, जुगदीप सर ने जॉय ऑफ लर्निंग डायरीज के और यूट्यूब चैनल के हमारे लिंक भी भेजे हैं, आप चाहें तो वहां से आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, करके हमें हम बता सकते हैं। So thank you everyone for joining and being with us on the wonderful, lovely Sunday morning. Thank you so much. We'll meet the थैंक यू next मैम। week Thank you, ma'am. from Thank you, ma'am. Jaipur. So next session will be conducted from Jaipur. It will be on hybrid mode, online and offline. So those who are there at Jaipur, it'll be wonderful to meet you all. And those who are not there, again, we'll be meeting online. Thank you. Bye-bye. Take care. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, sir. ma'am. Bye. Jai Hind. Thank you, ma'am. Thank you, Jai ma'am. Hind, ma'am. Bye-bye.